हेलो हाय असित कॉम्पिटेटिव पॉइंट तरफ आपण मान स्वागत। आज आम थर्मोडायनामिक रो सेकेंड क्लास। आज आम हीट उपर आज आलोचना करवा। हीट डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ हीट, वे ऑफ हीट, को मध्यंती हीट ट्रांसफर हुए ता विषय आज आम एनालिसिस करवा। तो ता पूर्व चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु, जहाँ फल रे आपण अपडेट वीडियो गुड़ा सब पाई परिबे। चलंतु देरी न करी वीडियो को आरंभ शेष जाए देखंतु। चलंतु आरंभ करवा। डेफिनेशन ऑफ हीट, व्हाट इज हीट। तो स्टार्टिंग करवा। हीट 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 व्हाट इज हीट। तो आरंभ करवा। हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी। कौन ना हीट इज डिफाइंड as the energy. Heat is defined as the energy transfer without transfer of mass across the system boundary. Across the system boundary. कौन है पिला माने ना हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफर ऑफ मास. हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास. कौन है ना विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास. एटी मास टा ट्रांसफर होबो नाही किंतु एनर्जी टा ट्रांसफर होबो. तो हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री is known as heat. So it can be transferred. It can be transferred. It can be transferred in three ways. पिला माने हीट कैन ट्रांसफर इन थ्री वेज. कौन कौन तीन टा हुए ना गोटे ला कंडक्शन सेकेंड पॉइंट रे कौन अच्छी ना कन्वेक्शन CONVENTION कन्वेक्शन. थर्ड पॉइंट रे कौन अच्छी ना रेडिएशन. पिला माने तीनटा मध्य हीट प्रवाहित हुए. गोटे ला कंडक्शन, गोटे ला कन्वेक्शन, अनदर इज रेडिएशन. तो आमे आलोचना करिवा यूनिट ऑफ हीट. यूनिट ऑफ हीट कौन आसीबो ना हीट रो यूनिट कौन रहिबो ना जूल रे आसीबो. जूल आसीबो, किलो जूल मध्ये आसीबो. हीट यूनिट कौन रहिबो जूल रहिबो, किलो जूल रहिबो. तो नेक्स्ट वर्क. व्हाट इज वर्क. तापर हमें वर्क डेफिनेशन जीवा. वर्क कौन ना इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफर without transfer of mass. कौन है पिला माने ना वर्क क्या कह जाए ना इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी ट्रांसफर
विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास एनर्जी जोटारे ट्रांसफर होतुव किंतु मासटा ट्रांसफर हो नथुव तो एटा कोन कहबा ना वर्क कहबा तो इट्स यूनिट कोन आसीबो यूनिट कोन रहिबो वर्क रो यूनिट रहिबो कोन ना जूल रहिबो किलो जूल रहिबो तो तापर आमे देखिबा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क हीट और वर्क मध्य कौन रिलेशन रोचे देखिबा दुईटा पॉइंट रिलेशन रहिबो कौन ना हीट एंड वर्क आर ट्रांजिट फेनोमेना हीट एंड वर्क आर ट्रांजिट फेनोमेना हीट एंड वर्क आर ट्रांजिट फेनोमेना तापर नेक्स्ट कौन रहिबो हीट आउ वर्क मध्य डिफरेंस कौन रहिबो ना हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन पिला माने बुझेला तो रिलेशन कौन रोची हीट और वर्क मध्य रिलेशन कौन रहिबो ना हीट एंड वर्क आर ट्रांजिट फेनोमेना और हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन तो हीट और वर्क दुटा कौन रहिबो ना पाथ फंक्शन रहिबो तो नेक्स्ट आमे जीवा पाथ फंक्शन कौन पाथ फंक्शन देखिबा हमें का कहया पाथ फंक्शन कौन ना इट इज डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम पाथ फंक्शन मीन्स कौन इट डिपेंड्स अपॉन on the path of the system. It depends upon on the path of the system is known as path function. Example कौन रहिबो path function ना heat आउ work heat and work are path function बुझिला तो ओके नेक्स्ट जीवा पॉइंट फंक्शन कौन पॉइंट फंक्शन को जीवा व्हाट इज पॉइंट फंक्शन तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम इट डज नॉट डिपेंड अपॉन depend on the path of the system ओके कौन है पॉइंट फंक्शन कौन ना इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम तार एग्जांपल कौन रहे पिला माने एग्जांपल एटार आछियो कौन ना प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बुझला कि तो कौन आसीबो ना प्रेशर वॉल्यूम आउ टेम्परेचर तो पिला माने नेक्स्ट आमे जीवा नेक्स्ट जीवा कौन ना जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कौन देखिबा ना जूल्स इज ए साइंटिस्ट
एस्टाब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड वर्क। जूल्स होचन कोन गोटे साइंटिस्ट जे कि रिलेशन कार बाहर करथिले ना हीट एंड वर्क। तो हीट एंड वर्क कौन कहते ना हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। तो पिला माने तो 1 कैलोरी हीट कौन 1 कैलोरी हीट इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। नेक्स्ट आमे जीवा कौन ना थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को। तापर आमे पिला माने कौन जीवा ना थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। Thermodynamic equilibrium कौन ना a system is said to be thermodynamic equilibrium if it satisfies the following three condition। कौन ना a system is said to be thermodynamic equilibrium if it satisfy the following three condition। पिला माने कौन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कौन ना सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ इट सैटिस्फाई थ्री कंडीशन। कौन कौन कंडीशन को सैटिस्फाई करिवो ना गोटे ला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम सेकेंड अछि थर्मल इक्विलिब्रियम नेक्स्ट अछि केमिकल इक्विलिब्रियम। तो पिला माने बुझेला तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कौन ना तीनटा हमर कंडीशन को सैटिस्फाई करूची कोटा ना गोटे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम गोटे थर्मल इक्विलिब्रियम आ गोटे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कौन टे देखिया ता विषय मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कौन ना when there is no heat transfer within the system is called mechanical equilibrium। पिला माने कौन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ना when there is no heat transfer within the system is called mechanical equilibrium। नेक्स्ट आसियो कौन थर्मल इक्विलिब्रियम।
थर्मल इक्विलिब्रियम कौन ना सॉरी पिला माने तो एटा लेखे व्हेन देयर इज नो हीट ट्रांसफर विदिन द सिस्टम इज कॉल्ड सॉरी एटा कौन ना एटा होची थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल सॉरी पिला माने एटा कौन एटा थर्मल इक्विलिब्रियम पिला माने थर्मल इक्विलिब्रियम कौन व्हेन देयर इज नो हीट ट्रांसफर विदिन द सिस्टम इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम मेकानिकल इक्विलिब्रियम कौन आसीबो मेकानिकल इक्विलिब्रियम कौन ना व्हेन there is no unbalanced force acting at any point or part of the system it is called mechanical equilibrium पिलामाने मेकानिकल इक्विलिब्रियम कौन ना व्हेन देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स acting at any point or path of the system then it is called mechanical equilibrium तापर नेक्स्ट रहला को ना केमिकल इक्विलिब्रियम पिला माने कौन chemical equilibrium when there is no chemical reaction between two bodies is called chemical equilibrium तो हमें लिखिए कौन ना when there is no chemical reaction between the two bodies is called chemical equilibrium बुझेला पिला माने तो केमिकल इक्विलिब्रियम कौन ना व्हेन देयर इज नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम तो आज पिला माने हमें कौन पढ़िले ना हमें पढ़िला आज हीट कौन वर्क कौन ट्रांसफर ऑफ हीट कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन हमें तीनटा पढ़िले तो हीट और वर्क मध्य रिलेशन कौन अछि हीट एंड वर्क मध्य रिलेशन हमें आज पढ़िले path function what is path function what is point function तापर नेक्स्ट हमें कौन पढ़ले ना केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ले थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम तीनटा लॉ को सैटिस्फाई करूची बा तीनटा कंडीशन को सैटिस्फाई करूची तो फर्स्ट वन इज मेकानिकल इक्विलिब्रियम सेकंड वन इज थर्मल इक्विलिब्रियम थर्ड वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम तो मेकानिकल इक्विलिब्रियम कौन हमें पढ़िले थर्मल विषय में आलोचना कले केमिकल मध्य आलोचना कले तो आज क्लास एतिक थाउ नेक्स्ट क्लास हमें देखा थैंक यू धन्यवाद।